there रेट is भी आ there गया है is और ये अच्छे रेट there पे is बेच रहे हैं। no, there is nothing to study in it majorly. They have a subsidiary which they are going to sell for around 300 some crores. उसमें से इनको 50% पैसा मिलेगा, which covers their market cap. So basically, whatever the business is free as on date. अब देखो कंपनी को, the market cap is around 140 crores and they have sold one asset to somebody and they are supposed to get 50% of that. तो जो करंट अपॉर्चुनिटीज वाला जो थ्रेड है उसके अंदर मैंने ये चीजें शेयर करी है. यू कैन सी द announcement also and you can see the company also. That is why this news came today and suddenly the stock went up to 20% upper circuit. मतलब So one एंटायर तो learn, उसका कंपनी फ्री हो जाएगी ना। हाँ एंटायर कंपनी उसका फ्री हो जाएगा. द एसेट वैल्यू इज मोर देन द मार्केट कैप एज ऑन डेट. मार्केट में। हाँ So this should ring bells in your head कि whenever there is cash coming in the business, market tends to price it high. That is why you may see 4-5 circuits going up. Even the if the market goes down also, उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. This will be on his on own sweet journey, just like times guarantee. Times guarantee में actually हुआ क्या है? The business was nothing. This new promoter came in, they bought this company, and they sucked out the float from the market. That is why time guarantee is not stopping. अभी आप इसमें फंडामेंटल देखने जाओगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, टेक्निकल देखने जाओगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको ब्रेकआउट लगेगा कि 20% मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. मीनिंग द फ्लोट हैज बीन सक्ड आउट. So these are prime candidates where they can go and do a preferential round at a higher valuation. So last 7 days the circuit is not opened. 7 days if you continue go for circuit, the stock is मोटा मोटा doubled in 7 days. टेक्निकल में तो वी कीप ऑन जंपिंग कि यार 10% चल गया, 20% चल गया. So these are the things when you do patterns, these are things you get. So should I start or should I wait? Still 10 minutes more. Please invite others. सर स्टार्ट कर लो अपने आप, जो आएगा ज्वाइन कर लेगा। एक राकेश जी भी तो आ ही गए हैं, सभी आ ही गए। गुड इवनिंग जी। हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग. आपके एक ग्रुप मेंबर का पैर टूट गया है. कौन? तुषार है ग्रुप में, वो घूमने कहीं गया था, स्लिप कर गया तो उसको फ्रैक्चर हो गया, बेचारा पैर टूट गया. ओ ओ ओ ओ तुषार तुषार वही ना जो बॉम्बे आए थे। हाँ बॉम्बे का मुझे याद नहीं. ही वॉज आपके विद मी साथ। व्हेन वी, हाँ मैं जब हम लोग गए थे और रमेश धमानी जी को मिलने तो मेरे साथ ही थे. हाँ हाँ तो वो बेचारे का पैर टूट गया. ओह तो आई होप जो सुबह हमने छोटा सा कॉल किया था वो आप लोगों ने एक बार देख लिया होगा, समझ लिया होगा, एंड मोर और लेस यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई स्टार्टअप कंपनीज एंड this should be very clear in your minds by now. I'm trying to proceed little ahead. I'm not going fast. I'm trying to go a little slow. So there should be no confusions. Can you see my screen? Yes, sir. So today morning we were discussing about a random sector which was the solar rooftop sector, and today it was around 14,845 megawatt of capacity, and in the next 5 years it was supposed to go to 41,779. जाएगा नहीं जाएगा, these are estimates, right? So how much is the opportunity size over? This is a 27,000 megawatt opportunity size, right? This was the equation. Now a company which was having 1200 megawatt of capacity would be having around 8% market share over here. And if this company is not expanding, this the market share may drop to 2.5% over here. सुबह हमने मोटा मोटा ये बात करी थी. Even and if this company, suppose next scenario was if this company goes from 1200 to goes to 5,000 megawatt, so here definitely the market share is more than this market share is more than this number, correct? So markets like businesses where there is an expansion of market share. Markets don't like businesses where there is a degrowth of market share. That is why market share is very important. And
स्टार्टअप्स एंड एस्टैब्लिश बिजनेसेस को मार्केट शेयर नहीं छोड़ना होता. दैट इज देयर कोर कॉम्पिटेंस, राइट? सो वेयर डू यू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम? आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा. वेयर डू यू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम? मैं कॉल बिजी हूँ From Google report. हाँ, from Google report, from annual reports, from broker reports, and so on and so forth, right? So there are two, three parts to it. Now, two, three parts. Let's take this scenario into consideration. So, what is my total market size? Is this? मैं आज की बात कर रहा हूँ 2023, right? Now, if I know this is the solar market size, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, so many parts to the value chain. Value chain मतलब कोई उसका क्लास बनाएगा, कोई उसकी शीट बनाएगा, कोई उसका पैनल बॉक्स बनाएगा, कोई उसकी नेट बोल्ट बनाएगा, करेक्ट? तो टोटल अपॉर्चुनिटी साइज एज ऑन डेट इज 14. लेट्स टेक इट 15,000 for the sake of simplicity. The total opportunity size today is 15,000, but one company is making panels, another company is making glass, third company is making modules, fourth company is making films which cover the solar cells, and then one company is making cells, right? Now market size means combination of all these things. Sorry, market size means the combination of all these things. यानी कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सेल्स का. company 1 2 3 4 5 6, he is selling something, he is selling something, he is selling something. इन सबका जो aggregate है will be the this quantity into X price would be so much of sales. Now this number, which 14,825 845, is called total addressable market size, करेक्ट? चाहे मैं पैनल बना रहा हूँ, चाहे मैं ग्लास बना रहा हूँ, चाहे मैं मॉड्यूल बना रहा हूँ, आई कैनॉट गो बियॉन्ड द मार्केट, which is this number. I cannot grow beyond the market, and I cannot go and I cannot grow beyond the market, which is not possible, right? तो मेरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज कितना है, चाहे कोई भी कंपनी हो, वो उसके लिए इतना है. नाउ once you understand the business, you understand the value chain, you understand what are the different parts of a value chain. Suppose panels is 40% of the value chain, glass is 7% of the value chain, modules is another 15% of the value chain, films is 2% of the value chain, so on and so forth. मैंने एक रैंडम नंबर्स लिखे हैं, मैंने आपको कोई फिक्स नंबर्स नहीं दिए. So this is my total addressable market size. I'll take some another color to show you. This is my total addressable market size. Now if my company is making, say, glass, if my company is making modules, another will right away, if my company is making software for this is say 3% of the value chain, correct? Next to look at is total obtainable market size. Total obtainable market size would definitely be always be smaller than total addressable market size. आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. अगर मैं मानो पैनल्स की बात करता हूँ, so panels would be what? If I talk about panels, which is number one, panels would be 40% of 14,845, और जो भी ये नंबर आएगा, you can calculate. Please try and calculate अगर आप कर ही रहे हो तो. Please try and calculate. 5938. 5938 megawatt. So on and so forth. So there are two concepts. कहीं पर आपको टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज मिलेगा, कहीं पे आपको टोटल ऑब्टेनेबल मार्केट साइज बोलो या सर्विसेबल पोर्शन ऑफ द मार्केट बोलो, ये चीज मिलेगी. अगर आपको ये चीज मिल जाती है देन यू आर वेल ऑफ. अगर आपको ये चीज नहीं मिलती तो आपको इसी से भी काम चलाना पड़ेगा, राइट? मैं जिस कंपनी की आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो कंपनी का नाम है
See, I have no investments in this, and this is not an advice to buy or sell, right? This company is of 100 crores market cap, and you see, this is the price chart of last 1 year and so on and so forth, and it's a SME company, and the sales are growing fast. वो सब चीजें आपको पता है कैसे देखनी है इसके अंदर, and dilution is also going very fast. This is the startup company. I if all things are good, ROC अच्छा है, ROE अच्छा है, promoter अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, वो सब चीजें हम लोग सब कर चुके हैं. How do I go and value this business? What they do is this company is making software for rooftop solars. If the software obtainable market size is 3% and is going to be 3.5, 4% for next 5 years, what is my future example? What is my future obtainable or oblique serviceable? Don't go by my spellings, please. मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपको पता ही है, right? Which is 3% of 42,000 megawatt. कितना होगा? कितना होगा? Very simple to calculate. 1260 1260 मेगावाट. आज कितना है? तो 450. 450 मेगावाट. 450 करेक्ट है? फोर्थ तीन 3% का ना 15,000 का. हाँ, 450. सो मेरा मार्केट साइज क्या कैगर से ग्रो कर रहा है फ्रॉम 450 टू 1260 इन अ पीरियड ऑफ 5 years. व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ द अपॉर्चुनिटी आई एम केटरिंग टू 5 years? कितना कैगर है? वेरी इजी टू कैलकुलेट, प्लीज ट्राई. 22%. हाँ, 23%. So is 20 now my opportunity size is growing by 23%. Is 23% a good number, a bad number, or a fair number? इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं पहले. What is गुड 23%? नंबर. Exceptionally good. गुड और बैड में एक एक करके बोलो यार, आप लोग को एको होता है मेरे को. गुड नंबर सर. It's a very good number. So the first step to value a startup or value a business which is in the startup phase or slowly started growing phase is for you to understand what is the total addressable market size or the total opportunity size in the future. आज नहीं, आज मेरा ये है, in the future क्या है. Correct. Now let's go and look at some data of AHA Solar. So we will directly go to the presentation. See, I'm not going into any details. मैं सिर्फ presentation जो जो मेरे को input मिला है मैं उसको उठा के assumption लेके आगे चल रहा हूँ. Now these assumptions can change depending upon the stuff. Now what they do is they are providing software. They are not providing modules or anything. What they are doing is they have enabled 3000 mega plus megawatt of solar installation के software. Right? तो यहाँ पर एक मेरी चीज और आ जाएगी, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज, टोटल ऑब्टेनेबल मार्केट साइज. तो टोटल एड्रेसेबल मेरा 14,000 है, टोटल ऑब्टेनेबल मेरा 450 है. अब इस 450 के अंदर जो मेरा आज का, अगर मान लो ये 3% है, अगर ज्यादा होता तो आई डोंट नो, दिस नंबर वुड हैव चेंज. मैं आज तक कितने इंस्टॉलेशंस कर चुका हूँ क्यूमुलेटिवली द लास्ट फ्यू इयर्स इज दिस इज 3,000. करेक्ट. तो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इसका मार्केट शेयर कितना है. डज ही गिव हिज मार्केट शेयर समवेयर? No, he does not. Maybe in the annual report. Suppose his market share is 4% or 5% or 6%. कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी कंपनी की रिपोर्ट में मिलेगा. आई एम अज्यूमिंग आहा सोलर जितना भी सोलर इंस्टॉलेशन के सॉफ्टवेयर बनते हैं जिसमें आप ट्रैक करते हो क्या है क्या नहीं, इस मार्केट शेयर इज सपोज 15%. 15% ऑफ दिस नंबर which is how much? 68.
which is मोटा मोटा 68 सर. which is मोटा मोटा मान लो 70 megawatt per year. And this company says, I am going to grow at the rate, if my market is going by 23%, I am going to go at the rate of 30%. Market से भी ज़्यादा. So if I grow 70 megawatt in 5 years at the rate of 30%, कितना बन जाना चाहिए मेरा? 70 megawatt, 70 CAGR growth, 30% 5 years. 105. 105. Now what becomes my market share over here? 105 divided by 1260. 1260. What becomes my market size over here? Market share, sorry. 8%. 8%. यहाँ स्टार्टअप में कितना था? 3%. यहाँ कितना हो गया? 8%. I want these kind of opportunities. So the first point is your total TAM or TOM, correct? You can also call it SAM. It went from 450 to 1260. Next, I went from 3% to 8%, which is good. These are the two inputs, the very two inputs you need. So now see, these are hypothetical numbers. यहाँ पर ये numbers fixed नहीं है. आपको जाके ये numbers ढूंढने पड़ेंगे reports के अंदर, आपकी study के अंदर. ये valuation तभी कर पाओगे जब आप अपना पूरा analysis, पूरी study कर चुके हो. Third point, since this company is a startup, correct? तो अभी तो मुश्किल से ग्रॉस प्रॉफिट आने लगे हैं और धीरे धीरे इसका काम होने लगा है, तो छोटा छोटा इसको एक नेट मार्जिन होगा. अभी यहाँ इसको देखो, टैक्स खत्म हो गया, यहाँ 27% टैक्स है. सो व्हाट डू यू थिंक इज द नेट मार्जिन दिस कंपनी कैन मेक लुकिंग एट द नंबर्स? 18 करोड़ सेल्स, 80 lakhs नेट मार्जिन. व्हाट डू यू थिंक इज द नेट मार्जिन? अब ये डिविडेंड देने के पोजीशन में नहीं है बिकॉज ही इज अ स्टार्टअप. This also you have to study what are the net margins, what are the companies saying, what are the company reporting, what are the other companies in this domain reporting. If there is no competition in the country, I should go and look at businesses outside the country. So what is my net margin? 80 lakhs divided by 18 crores. What is my net margin? 4%. 4.5%. 4%. I assume कि going ahead when the business becomes stronger, they get more customers, they get some kind of operating leverage, this 4% margin can go up to 6%. कोई इसको 4% पकड़ेगा, कोई इसको 5 पकड़ेगा, कोई बोलेगा नहीं 3% हो जाएगा. सी ब्लैक स्वॉन इवेंट्स कैन कम. कल को क्या हो जाए किसी को नहीं पता. बीच में कोविड आ जाए किसी को नहीं पता. बीच में सब कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए किसी को नहीं पता. बट आई अज्यूम द प्रमोटर इज गुड. आई हैव स्टडीड द बिजनेस. मुझे समझ आता है बिजनेस. सोलर इंस्टॉलेशंस बढ़ रहे हैं, रूफटॉप सोलर बढ़ रहे हैं. Software would be required. He's a marquee player. He will be able to charge more and cost कम होंगे. My assumption is from 4% this margin is going to go up to 6%. सर ऐसा भी हो सकता है ये जैसे मार्केट बढ़ते जाएगा तो उसको रेट कम करना पड़ेगा या मार्जिन कम करना पड़ेगा, ऐसे भी हो सकता है. हो सकता है ना. यहीं पे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. अगर नए प्लेयर्स आ जाएंगे तो ये मार्केट शेयर भी तो लूज करेगा. जो हम यहाँ इसका एज्यूम कर रहे हैं, और उसको अपना सस्टेन करना. That is the story which we have to cling on while we are invested into a company. अगर स्टोरी चेंज हो रही है, अगर कोई नया प्लेयर आ रहा है जो इसका मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, इसको प्राइसेस कम करने पड़े हैं, उसकी वजह से इसको मार्जिन्स नीचे जा रहे हैं, then your assumptions and valuations will change accordingly. So you value a business maybe once in 2 quarters or maybe once in 4 quarters, once a year, not every day. Correct? And then also you can be wrong. So I'm giving you the basic inputs which you require to value these kind of businesses. First is my future addressable market size. उसमें से मैं कितना सर्विस कर पाऊंगा, कितना ऑब्टेन कर पाऊंगा, और वो मेरा मार्केट क्या स्पीड से ग्रो कर रहा है. इन दिस केस इट इज 23%, which is absolutely very good. Then this company can be suppose gaining market share from 3% to 8%. So in such a scenario, if he is able to even grow at 20% rate, which is the market rate, he will be able to increase his margins. Provided if कोई ब्लैक यार मैंने फ्यूचर तो देखा नहीं है,
आपने भी देखा नहीं, कल को क्या हो किसको पता। अगर कोई ऐसा इफ कंडीशन आ जाए तो एटलीस्ट आई नो ना कि जो इफ कंडीशन आ रही है वो मेरे इस पॉइंटर को डिस्ट्रॉय कर रही है, इसको कर रही है या इसको कर रही है। So that maybe that way I can go and act. अभी तो सिर्फ मुझे इतना पता है कि दिस इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रिडिक्ट टू मच कि मेरा मार्जिन 6% होगा या 3% होगा या 4% होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि द ट्रेंड ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बिजनेस, द इंडस्ट्री इज अप। ठीक है सर। देन नेक्स्ट राइट सर, राइट कम सर। देन PEs can come in 6 months, PEs can come in isolation, PE का कुछ नहीं है। So today it is a startup company. So if I look at the PE over here, which is flawed metric to look at, अभी प्रॉफिट देने के लिए प्रॉफिट लॉस नहीं है सस्टेन। स्टार्टअप बिजनेस में पीई से नहीं वैल्यू करते हैं। दिस पीई इज 65। अगेन यू हैव टू एस्टिमेट व्हेन दिस कंपनी गोस, द पीईज विल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज पीई हैज ऑलरेडी रन अप वेरी फास्ट। अगर मैं जनरलाइज मेथड से चलूं, बट स्टार्टअप्स डोंट लुक एट पीईज। But maybe this 5 years आगे, this 60 का PE, I'm assuming this comes down to say 25, correct? So ideally, my company should be 1260 crores into 0.08 into 0.06 into 25. कितना आता आपका आंसर? So 1512। मेरा सर तो ये इधर आता तो है सर। 1500। सर मैंने गलत। 1260 इंटू 0.08। हम्म। अच्छा 0.08 है, मैंने 0.8 कर दिया। यस सर 151 के राउंड आ रहा है। 151। So ideally, I can say this value of this company should be around 145 to 155 crores, correct? अगर मैं ये 25 का एग्जिट मल्टीपल को, सपोज सोलर में पागलपंती हो जाए, सारे दुनिया सोलर सोलर करने लग जाए, if this goes to 35, then my this number changes, from 25 to 35, then your this value would change accordingly. So which should be 1260 into 0.08 into 0.06 into 35, which should be around 210 crores. 212। See, 212। again, it would not be a fixed number. It would be somewhere around 210 to 225 crores. It will not. It is never a fixed number. It is a range of numbers. Correct. So these are now assumptions. मेरा एग्जिट मल्टीपल क्या होगा, वो एग्जिट मल्टीपल कैसे करना है, क्या करना है, वो तो मैंने आपको एक रैंडम नंबर दिया। वो एग्जिट मल्टीपल भी आपको कैसे जज करना है, क्या करना है, उसके बारे में भी हम लोग आगे देखते हैं। सो यू सी, as the numbers change, which is but obvious, this value would change. And today, the market cap of this company is 100 crores. So in the next 5 years, if my company from 100 crores is going to 200 crores, what is the CAGR compounding? If you are wanting to double your money, what is the CAGR compounding? In 1 year? 5 years, sir. Because we have taken opportunity size of 2028. Okay. Valuations is forward, never backward. 14-15%। 14-15%। अब ऐसा तो है नहीं कि यार वी आर नॉट गॉड कि यार ये 210-225 करोड़ का मार्केट क्या 5 साल में आएगा। हो सकता है 2 साल में आ जाए, हो सकता है 6 महीने में आ जाए, आई डोंट नो। But as per the numbers suggest, as per the fundamentals suggest, this company should be valued at this amount. The lower the price I get, the better it is for me. Suppose this market cap was not 100 crores. Suppose this market cap was say 50 crores and I was getting up to this equation. Then your 14-15%
CAGR shoots up drastically. Suppose calculate the starting value as 50 crores, the ending value is 210 crores in a matter of 5 years. You make your money 4 times. Now you see your CAGR. It should be more than 25% something. करा किसी ने? वैल्यू 50 करोड़ बोला ना, स्टार्टिंग वैल्यू 50 करोड़, मैंने आधा कर दिया उसको. सपोज हमारा 35 स्टार्टिंग वैल्यू 50, 35% आ रहा है. which is supernatural. Which is Yes. supernatural. 35% is not going to sustain, which is supernatural. So have logical estimates. My logical estimates are, suppose this company or this business should be getting a 15 exit, 15 P exit multiple. Then the valuation number changes. So I am trying to look at a business where I can get 15, 17 or 18% CAGR compounding in the next 3, 4, 5 years. अगर इतना कंफर्ट है और इसके नीचे भी मेरे को प्राइस मिलता है, that means I have got some kind of margin of safety. And these numbers are to be conservative, not very loose end numbers, conservative numbers. Because यहाँ पर सब अभी hypothetical scenario चल रहा है. ये correct scenario नहीं है. ये correct scenario आपको business to business जाके मिलेगा. Let's try and do some other company जो आप लोगों के पास invested नहीं हो. Any company you name. अरे एक मिनट, एक क्वेश्चन है. वो हाँ. स्क्रीन में नंबर 3 क्या है? वो 6% क्या था? 6% कहाँ लिखा है मैंने? नंबर 3 जो पहले तो टैम वो वाला समझा, ग्रोथ रेट समझा 3 to 8, मार्जिन सर ने एंड बताया. लास्ट वाला एग्जिट मत चल. 6% क्या है? इन्फ्लेशन रेट? Profit margin, net profit margin, ओके, गॉट इट. net profit margin. इससे जो अभी इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 4% है. कल को मानो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन जैसे विजय जी कह रहे थे कंपटीशन आ जाए, कुछ आ जाए, दिस गोज डाउन टू 3% और मे बी 2%, देन व्हाट? So you सर have ऐसे भी to होता है. value every year, not every day, not every hour. This is not technical, this is not techno funda. करेक्ट? ये रोज रोज करने मत लग जाना. रोज रोज करने लगोगे तो कंफ्यूज होके जीरो हो जाओगे. वंस अ ईयर. सर ऐसे भी करेक्ट? तो हो सकता है कि उसको कोई कंपटीशन ही नहीं आवे और वो 6% ही मार्जिन रेट पे चले और सेल बढ़ सर जाए, तो 3 साल में भी हो सर सकता है, 2 साल में भी हो सकता है, क्यों नहीं जैसे हो आप कह रहे सकता? हैं. क्यों हाँ, नहीं वही हो वही. सकता? अगर अगर कंपटीशन नहीं आएगा तो सबसे पहली चीज क्या हिलेगी? सबसे पहली चीज उसका मल्टीपल हिलेगा ना. अगर हाँ, कंपटीशन नहीं आया है और ये मल्टीपल 60 हो जाए फिर तो 2 साल में भी हो सकता है. सी, हाँ. प्लीज अंडरस्टैंड, नॉट इन एनी वे ट्राइंग टू प्रिडिक्ट एनीथिंग. हमको तो सिर्फ ये देखना है कि मुझे कहाँ 15-17% का कैगार का रेट मिल रहा है. अगर उससे मुझे नीचे मिलता है तो आई एम वेल ऑफ. अगर मुझे 15-17% का कैगार का रेट मिलता है, आई एम स्टिल हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड. मेरे को वो रातों रात 100 करोड़ वाला वो काम नहीं करना है. अमीरों की स्कीम नहीं चाहिए. आई एम हैप्पी. आई हैव टू बी ऑन टू सम सेंसिबल नंबर्स. करेक्ट? मेरे को रातों रात पागल नहीं होना है. सो नाउ अगर ये 2 साल में आ जाए एंड इफ द नंबर्स आर गोइंग लाइक दिस, जो हमने एस्टिमेट किया था, सपोज दिस वाज 35, और अगर 5 साल के देखिए 2 साल में आ जाए, सपोज द मार्केट कैप फ्रॉम 200 crores goes to 400 crores, definitely your PE has expanded more. Correct? And you are overvalued. इसीलिए आज एक प्राइवेट कंपनी है जो आप लोग सब देख रहे थे, वी आर डिस्कसिंग इन बैच 4 आल्सो. सो लेट्स ट्राई एंड डू सम वर्क ओवर हियर. So we are on the smart analyzer and see what has happened. Price to earnings 4 times, 11 times, 24 times, 34 times, 78 times. And this is your EPS. The stock price has gone up by 10x from 8 rupees or to 740, more than maybe 40x. यहाँ से यहाँ 10x चला गया. तो ये 10x जाने का रीजन क्या है? क्या वो ग्रोथ इन द अर्निंग्स है? क्या वो
मल्टीपल्स का एक्सपेंशन है। डेटा आपके सामने है। expansion majority आप ऑफकोर्स पी एक्सपेंशन ना। अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो ये रहा है कि हम लोग हो गए पागल। क्यों हो गए पागल? एक अनाउंसमेंट आता है जी कि प्रावेग के अंदर क्या हुआ है, इसने 14,90,000 वारंट्स प्रेफरेंशियल्स इश्यू किए हैं। तो क्या प्राइस है, इसने प्राइस ने दिया एंड इसमें टाटा म्यूचुअल फंड ने जाके इन्वेस्ट किया है। एंड सच अलॉटी विल सब्सक्राइब टू द प्रेफरेंशियल इशू थ्रू वन मोर ऑफ इट्स स्कीम्स। आगे भी इन्वेस्ट करूंगा एंड बिग बिग मार्की नेम्स ओवर ईयर। करेक्ट। बट इफ यू लुक ओवर ईयर दिस बिजनेस, ठीक है, अयोध्या में टेंट बनेगा, होटल बनेगा, बहुत अच्छी स्टोरी है, इसकी स्टोरी में कोई कमी नहीं है। बट यहाँ नजर डालो, क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? प्रमोटर स्टेक कंटिन्यूअसली अपना ऑफलोड कर रहा है। And now, and after that number which you have seen on screen here, now the new promoter stake is down to 49%. सर मेरे को यही बात पूछनी थी कि ये जब बड़े म्यूचुअल फंड सब एंटर करते हैं, ये प्रमोटर निकलते जा रहा है, तो इनको भी तो पता होगा ना कि ये बिजनेस ऐसी है। सर सिर्फ मतलब यू आर वेल ऑफ। आप एक रिटेलर हो, आपको वो कंप्लायंस इश्यूज नहीं है। आपको इन्वेस्टर को पैसा कमा के नहीं दिखाना, नहीं तो इन्वेस्टर जूते मारेगा, भैया मेरे पैसे वापस करो, आप मेरे को पैसा कमा के नहीं दे सकते। So you are kind of well off. So don't go into their analogy why they are buying. They are buying for several reasons. If you want, we can discuss the full night what are their reasons. Do your own analysis. Don't imitate anybody else. What is actually happening? And this guy, he came up with an IPO in 2023. Why I can say you this is, now you see, issue from shares. We used to see from cash flow from financing, 56 crores. Correct? What has actually happened? 18, 21, 23. Showing startup attributes. 9 crores reserves, 84 crores reserves, 144 crores reserves. तो रिजर्व जो बढ़े हैं डायल्यूशन से बढ़े हैं, रिटेन अर्निंग से नहीं बढ़े हैं। दैट इज नंबर वन। डेब्ट इसने ज्यादा नहीं लिया है। yes, he has good margins, so that is why he is making good amount of money. So how much money has he made in the last 2-3 years, and including this TTM also? TTM को छोड़ो, how much money has he made in the last 4 years? Say 35 and 15 and 20, say 70 crores। मोटा मोटा 70 crores है इनका चारों का टोटल। हाँ कि B नहीं? मोटा मोटा 11, 4, 15, 15 और 20, 35, 35 और 34, मतलब 70 करोड़ का मोटा मोटा। अरे सर आप नहीं पी सर देख ये रहे हैं ना, ओ सॉरी 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 सॉरी। कितना है 15 इसका? और 12, ये 27, कितना है ये इसका? 27, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। सॉरी सॉरी। 27 करोड़ नो नो, कम 3 हियर। साल का। These four numbers, 4 and 15, 15 and 40. These four numbers. हाँ Sorry ये sorry, ये these four numbers. 11 और 4 15 और 12 27 और 20 समझो ना 47। ठीक है। 2020 से 23, 2020 से 23 कैश फ्लो कितना है? करोड़। 49। बराबर। हाँ जी। अच्छा है, वर्किंग कैपिटल इसका नहीं फंसता है और ये अभी एक्सपेंशन कर रहा है। और आपको लगता है ये सच में एक्सपेंशन कर रहा है? 36 करोड़ इज फॉर एक्सपेंशन एंड बैलेंस 36 इज समथिंग एल्स। करेक्ट। अगर ये धंधा इतना ही अच्छा है, कैश फ्लो भी इसका इतना अच्छा है कि ये अपने जितने भी प्रॉफिट्स दिखा रहा है, इज एबल टू कन्वर्ट टू कैश, व्हाई ही वांट्स टू वैल्यू अगेन एंड अगेन एंड इज नॉट इशूइंग न्यू शेयर्स? द प्रोमोटर्स आर सेलिंग, प्रमोटर की स्टेक नीचे चलेगी। आई डोंट डाउट स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा, उस बारे में मेरा कोई व्यू नहीं है। जाए तो अच्छी बात है, नहीं जाए तो भी अच्छी बात है, हार्डली मैटर्स। बट व्हाई इज ही अगेन एंड अगेन डाइल्यूटिंग? दैट इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न। नाउ आर यू एबल टू फाइंड what is the market
opportunity size of the tent resorts and all this kind of a thing, क्या आप इसमें वो चीज जाके ढूंढ सकते हो? कितना अपॉर्चुनिटी साइज है जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं? क्या आपको इस कंपनी के अंदर ऐसा कुछ मिलता है? सी, कितना लाख स्क्वायर फुट है, इतने मील सर्व्ड है, इतने रूम सोल्ड है, क्या आपको कुछ ऐसा कुछ इसमें दिखता है? Tourism, what is the market size of tourism and hospitality in the country today? Market size of $75 billion in financial year 2020. मान लो नहीं ग्रो किया. ट्रैवल मार्केट इज एस्टिमेटेड, दिस इज अ ट्रैवल मार्केट. और वाली ट्रैवल मार्केट नहीं चाहिए मेरे को, हॉस्पिटैलिटी चाहिए. टूरिज्म इंडस्ट्री, एक सेकंड. सर उनका बिजनेस मॉडल थोड़ा डिफरेंट है, मतलब मुझे मालूम है, टूरिज्म मुझे हॉस्पिटल मुझे से मालूम अच्छा। है, मुझे मालूम है. मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. इसके अंदर से जो इनका बिजनेस मॉडल है वो इनका टोटल ऑप्टिमल मार्केट साइज देगा. मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ. व्हाट इज द साइज? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट $23.5 billion. व्हाट इज $1 billion? 8,000 करोड़। 8,400 करोड़. 8,400 करोड़ को अगर मैं 23 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 23.5 इंटू 8,400 करोड़. व्हाट इज द साइज ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन द कंट्री एज ऑन डेट? फ्यूचर में क्या होगा वो तो अभी देखा नहीं मैंने. 1,97,000। 2 लाख करोड़ मान लो. हाँ, 2 लाख करोड़ मान लो। 2 लाख करोड़ आपका. अब इनका बिजनेस मॉडल कुछ अलग है. लेट्स सी द बिजनेस मॉडल. सपोज द बिजनेस मॉडल इज समथिंग एल्स. व्हाट इज द सेल्स दे आर डूइंग? 4 करोड़। 84 crore. So 84 crore is what percentage of 2 lakh crore? मैंने डेटा गूगल से उठाया, मेरे पास हार्डली हार्डली एनीथिंग। hardly anything. Correct. So my total addressable market size in this number is hardly anything. Suppose Praveg is a company which grows by 100% for the next 5 years, and this 84 crores, if I'm able to grow at 100% hypothetically, which will not happen for the next 5 years, what becomes my number? 16,800. 2,688. Hypothetically 3,000 crores. What is 3,000 crores of 2 lakh crore market cap? वो भी 1% से नीचे ही आएगा। मैं Correct. So 3,000 into market share तो 1% से नीचे ही है, तो hypothetically मैं 1% ले लूं. इसका प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी गुड. सपोज व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन? 28 करोड़ on 84 crores. What is the profit margin over here? 30%. 30%। Let's take it around somewhere around what say 25%. थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर देते हैं या 20% पे करते हैं. इतना सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है. व्हाट इज द पीई मल्टीपल ओवर ईयर? 84. ठीक है. आई assume this PE multiple going down to not even 20. Why? Because it is highly aggravated. कितना वैल्यू आता है आपका? मैं आपके सामने हाइपोथेटिकली कर रहा हूँ. मैं ये कंपनी फॉलो नहीं करता हूँ. 100 करोड़. कितना मार्केट कैप है? कोई लिंकेज ही नहीं ना. 900. कोई लिंकेज ही नहीं है ना. क्यों उसका लिंकेज नहीं है? बिकॉज ये जो प्राइस है ये पहले ही आपका प्राइस टू अर्निंग्स के मल्टीपल से हाइप्ड है. तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना इसको यहाँ बाय करने का.
सी अभी अभी ये आज सर्किट लगा होगा 750 का भाव, ही कल को 1000 हो जाएगा, आई डोंट नो। यूज योर टेक्नो फंडा एंड यूज योर चार्ट्स ओवर हियर एंड प्रवेग हैज बीन जंपिंग लाइक एनीथिंग। कोई मतलब ही नहीं बनता ना। लुक ओवर हियर, कांट दिस पी री रेट। हमने इसको 100% से ग्रो किया है, क्या ये 100% ग्रो करेगा? मतलब ही नहीं। So at this moment, looking at big investors and Tata Capital going and buying, and for whatever reason they want, should you, the retail investor, go and buy Pravek? The answer is bluntly no. But होगा क्या? आप यहाँ से देखोगे यार, मैंने एक लाइन मार लेता हूँ, ये मैंने ऐसी एक लाइन मार ली, ये स्टेज 2 चल रहा था, ये स्टेज 3 चल रहा था, ये वापस स्टेज 2 में चला गया, ये कप एंड हैंडल हो गया। हम लोग ये करते रह जाते हैं। वाई? 750 से वो 850 को, अरे यार मैं आई मेड 100 रुपीज, वाओ आई एम चैंपियन। But look at the risk. The risk is, if the market slows down, if they have some problem or they don't even have a problem, will they be able to grow at this rate? Last 5 years, the number was very small. 5 साल, 1 2 3 4 5, 50-60 करोड़ का इनका टॉप लाइन ग्रोथ थी। दे आर अ वेरी हाई टॉप लाइन ग्रोथ रेट। 3 साल में क्या हो गया, और अभी टीटीएम में क्या हो गया? द ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोइंग is going down, 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 right? We want accelerating growth rate. अभी क्या हो रहा है? ठीक है, ये टीटीएम नंबर है, यहाँ नंबर आपका अच्छा आएगा, 125 करोड़ की सेल आएगी, सब कुछ आएगी। सी व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, इसलिए आपको इतना बड़ा नंबर मिल गया। मुझे कितना टाइम लग रहा है सेल्स को डबल करने के लिए? चलो कोविड आ गया, एक्सेप्शनल है, 1 2 3 4, प्रॉब्ली 5 साल लग रहे हैं सेल डबल करने के लिए। तो 84, प्रॉब्ली 5 साल लग रहे हैं, मान लो 4 साल लगते हैं, 84 को डबल करने में कितने साल लगेंगे? 4 साल। 4 साल में सेल कितनी होगी दोस्त? 160 170 200 करोड़। 200 करोड़ में मेरी सेल हो जाती है 4 ईयर फॉरवर्ड। कितना मेरा मार्जिन है? सिर्फ 30%। So 4 year forward from 84 crores, I make it around say 200 crores and 30% margin. कितना मेरा पैट आएगा? Probably 60-65 crores. Correct? What is the market cap today? 1600. 1681 divided by forward pat of 60-65 crores gives me an exit PE of 25. Still expensive. Still expensive. Now, how do you get to this, get to these PEs? If my company is growing at 10% or less, that means it is at GDP growth rate, mota mota. I cannot give it a exit multiple of max 10 to 12. If my this company is 15-17%, I can give it a max exit multiple of 18 to 20. If it is more than 18%, say 20-24% or इस रेंज के अंदर है, I can give it a max exit multiple of 25 to 27. इसके ऊपर जाना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि जैसे जैसे ये ग्रोथ रेट नंबर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सस्टेन करने के पोजीशन में नहीं रहेंगे। करेक्ट? एंड यहाँ पर क्या हो रहा है? सपोज दिस कंपनी डबल्स इन 4 years। 84 का डबल कितना होगा? 168 में मान लो 200 करोड़ हो जाएगा। 200 करोड़ का 30% मार्जिन है 60 करोड़। व्हाट इज माय मार्केट कैप? आई एम पेइंग इट इन exit multiple of 25 today, which is on the higher end of the range. Not assuming कि यार कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, कुछ तो रिस्क आ सकता है, मेरे पास कुछ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो। यहाँ पर ऐसी चीज मुझे तो कुछ भी नहीं दिखती। करेक्ट? So this is what you call bear case, fair case, bull case. आपको ये तीनों अपनी assumptions बनाने हैं, तीनों ये फॉरवर्ड चीजें देखनी है, फिर आपको जाके देखना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट और आपकी जो वर्किंग है वो किस दायरे में आ रहा है। Suppose it is coming here, suppose the growth rate is
18-20%, it is profitable and it is converting cash, ROC अच्छा है, ROE अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, और मुझे वो एग्जिट मल्टीपल मानो यहाँ में मिल रहा है, मजा आ गया यार। इससे अच्छी चीज ही क्या हो सकती है? और ऐसा तो है नहीं कि यार कोई किसी को दिखेगा तो आपको प्लेटर पे लाके दे देगा जी हाँ जी ये ले लो जी, आपका आपका भला हो जाएगा, नहीं। यू हैव टू फाइंड इट ऑन योर ओन, and this is what is Pravik for. And why do the what are these things? These things are when your momentum will catch up, big investors are there, every Tom, Dick and Harry wants to buy, every techno funda wants to buy. This is not the time to buy. Here you want to buy, you can very well make 20, 30, 40% returns and quick returns and be happy. But can you make wealth over here? I doubt. And you see this, somebody who invested here or somebody who invested here has made tremendous wealth. And what is the reason over here? Multiples expansion. एक आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल दूं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। दिस इज माय पर्सनल एग्जांपल। मार्केट क्या 1000 करोड़, क्या इसका अपॉर्चुनिटी साइज है? इसमें अलग अलग 5 डिवीजन है, तो आपको चारों पांचों डिवीजन के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। लकीली आई गॉट दिस कंपनी एट अराउंड 240 करोड़, करेक्ट? दे से वी वांट टू ग्रो एट 25 to 30% and we'll be able to do that for the next 5 years. The market size is growing at 15%. Suppose market is say 1000 crores. For the next 5 years, it will be growing at 15% CAGR. They are suppose 200 crores, so 20% of the market size they have, and they are growing at 25%. तो यहाँ क्या होगा? इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा या घटेगा? You don't need to calculate the precise numbers. You can just बहुत बड़े market size बढ़ेगा, market share बढ़ेगा ना? And as I told you, markets like businesses where they are gaining market share. Correct? When I did all this calculation for my this investment at 240 crores, my answer was 1400 crores. Today, this answer what I get is 2000 to 2200 crores. तो इसको तो छोड़ो, ये तो अभी मानो ये तो आगे की बात है, अभी तक तो हम यहाँ भी नहीं पहुंचे। 1400 crores is what? 1.58 crore shares. So 1400 crores divided by 1.58. बाकी की मैथ आप कर लो। 886। 86 ना, तो मोटा मोटा 800 रुपए से लेकर 900 रुपए के बीच में कहाँ है इसका करेक्ट वैल्यूएशन? एज आई सी इट, स्टॉक प्राइस है 600 टुडे, 630, और कहाँ से गिरा है? 747। This is how you do it. So what I was getting at something at 240 250 crores, which to my best estimate was valued at 1400 1500 crores at that time. Logic I showed you. See again, this is just one way to value. This is not the ultimate way, and by no means it is 100% correct because it has lots of assumptions in it. So 250 का अगर आप 1500 भी करते हो, so there was a 6x opportunity. अब इसमें से मुझे 2x मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है, वो पेशेंस की बात है। तो 4 तो हो चुका है। Now my value comes to around 2000 crores because the business has grown, the numbers have changed, the forward-looking metrics has changed. Getting it? Now these are for मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। अलग अलग बिजनेस का अलग अलग होता है। दिस इज जस्ट
the company which is into a startup phase and growing from little from a startup to a little stabilization phase. ये startup phase में यहाँ थी, see the revenues are growing very fast, इसके gross margins आने लगे, and they were also profitable and they were not diluting. ये चीज हमने देखी ना कि हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर से कुछ अगर मैच नहीं कर रहा है, देन वी शुड बी वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट. यार ये ऐसा क्यों कर पा रहा है? व्हाई इज नॉट बी नीडिंग एनी मनी? व्हाई इज नॉट टेकिंग बोरिंग्स? ऐसा तो नहीं कि ये कंजर्वेटिव ग्रो कर रहा है और ये बोरिंग्स लेके और वैल्यूएशन करके फास्ट ग्रो कर सके, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी सर। एक क्वेश्चन ये था कि ये जो हम वैल्यूएशन कर, तो वी हैव टू डू इट ओनली आफ्टर दी मार्च, मतलब जो हमको नंबर्स आएंगे ऐसा उसके बाद ही? ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? यू कैन फाइंड आउट. यू कैन गो एंड मीट द मैनेजमेंट, यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस, यू कैन गेट टू नो द अपॉर्चुनिटी साइज, यू कैन गेट टू नो कि कितना ये मार्केट साइज बढ़ेगा, क्या होगा. अगर आप क्वार्टर के बीच में या साल के बीच में जाके ये चीज कर रहे हो, तो आप ये सब चीजें जाके देख सकते हो ना, आप पता कर सकते हो. यस और नो? यस सर, यस सर. गिव मी 1 second, आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग. गिव मी 1 second please. I found a video in my old dump thing, and I want to show you this video. पूरा देखने की जरूरत नहीं है. Just see the person who and what he says for the say the first 1 or 2 minutes, right? So I'm posting this video in the general tab. Give me 1 second. कहाँ गया यार? हम्म, आप बोलोगे तो मैं आपको प्ले भी करके दिखा दूंगा, पर मुझे श्योर नहीं कि आपको वॉइस आएगी कि नहीं आएगी. Can you see my screen again? यस सर. देखो अब वॉइस आती ही नहीं आती, बताओ. नहीं सर, आवाज नहीं आ रही. बट ये वीडियो आपने अपलोड किया हुआ है सर. नहीं सर, अब आप फिर वो वीडियो के चक्कर में रखी. आपको आवाज सुनाई दी वो क्या बोल रहा था? नहीं सर, आवाज नहीं थी ना. वो ये कह रहा है कि द फर्स्ट थिंग वी लुक इनटू अ बिजनेस इज द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी साइज. इफ द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी इज स्मॉल, यू कांट मेक मच मोर मनी देन द अपॉर्चुनिटी साइज. और वही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं इन द वे वी आर ट्राइंग टू वैल्यू द बिजनेस. वीडियो मैंने शेयर कर दिया है, आप लोग अपने अपने स्क्रीन पे इसको देख सकते हो. इट टॉक्स अबाउट द एट्रीब्यूट्स. व्हाट आर वी लर्निंग? द एट्रीब्यूट्स. ठीक है? तो सिर्फ आपको ये देखना आना चाहिए कि आज मेरा मार्केट क्या है एंड वेयर इज द मार्केट गोइंग. इफ आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, आई नीड, इफ जो कंपनी में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें अगर ये डेटा नहीं है, तो उसके कंपटीशन में आ जाके होगा. इफ यू स्पीक अबाउट आइसमेक के अंदर ऐसा कोई भी डेटा नहीं देता वो कि पिछले 5 years के एनुअल रिपोर्ट्स उठा के देखो, आपको कुछ नहीं मिलेगा. So where did I find the opportunity size? In the annual report of Whirlpool and the annual report of Voltas. Correct? So you have to be an investigator to find out these opportunities. The opportunity size was big. 5 verticals. Nobody is in the 5 verticals. And even if you can go on तिजोरी आपको बहुत डेटा स्टार्टिंग करके दे देता है, मार्केट साइज निकाल के दे देता है. तिजोरी फाइनेंस इज अ वेरी गुड वेबसाइट to get you all these kind of data.
Can show you one example. So never hesitate to invest in your own self. You should have all these tools if you really want to save time. तो एक कंपनी का नाम लेते हैं रैंडमली, जिसका नाम है जिसका नाम है कोई नाम बोलो यार, कोई कंपनी का अच्छे से। जिसका नाम है दीपक नाइट्रेट। और ये उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग अपॉर्चुनिटी साइज हैं, मार्केट सॉरी नॉट अपॉर्चुनिटी साइज, उसके मार्केट शेयर हैं, एंड ही इज गिविंग द सोर्स आल्सो। सपोज आई लेट मी गो टू isopropylene alcohol market share 65%. 65% of what? Here it is. Leading manufacturer of maker of isopropylene alcohol IPA 65%. कहाँ मिला? उसकी प्रेजेंटेशन में। Next what he has nitrogen phosphate potash market share 18%. ये री डिटेल। Correct. So this is how you can get these kind of details. Let's go to APL Apollo स्टील सेक्टर में चले जाते हैं। हम लोग कोई स्पेशलाइज कंपनी पे नहीं जाते। देखो यहाँ क्या है। चलो कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग करने का ट्राई करते हैं। हाउ डू यू रिवर्स इंजीनियर? इसके लिए आपको सब जगह आई एम अज्यूमिंग आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सब जगह है, तो यहाँ पर चलो ये तो देता ही नहीं है। खैर, नाउ लेट्स गो एंड सी 2023 का एनुअल रिपोर्ट, और लेट्स लुक एट द प्रेजेंटेशन ओवर हियर। ये भी नहीं, हमें मार्च का प्रेजेंटेशन चाहिए। यहाँ पर आपको इसने कितना माल क्या बेचा वो सब दिया होगा। ये सेल्स आ गई, वॉल्यूम्स आ गए, ये आ गया, वो आ गया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ गया, स्ट्रक्चर्स आ गए, हेवी स्ट्रक्चर, सुपर हेवी स्ट्रक्चर, लाइट स्ट्रक्चर, एंड ये सब चीजें इसकी आ गई। सी व्हाट इज जीपी पाइप्स मार्केट शेयर, जीपी पाइप्स मार्केट शेयर, बिल्डिंग मटेरियल स्ट्रक्चरल स्टील मार्केट शेयर 55%। ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब स्ट्रक्चरल के अंदर आती हैं। स्ट्रक्चरल स्टील मार्केट शेयर, लेट्स सी कहाँ से डेटा आ रहा है। What is the CAGR growth he has had? 19%. Will he be able to continue this CAGR growth? We don't know. Correct? What is his market share today? 55%. स्ट्रक्चरल में सारी चीजें आ गई, ब्लैक पाइप, हॉलो पाइप सब आ गया। मैं आपको ये दिखाना चाहता, अगर डेटा दिया होता ना उसने, तो ब्लैक पाइप को जाके वी कैन कैलकुलेट रिवर्सली कि मार्केट की अपॉर्चुनिटी मार्केट साइज कितना है आज की तारीख में। सो बिल्डिंग मटेरियल स्ट्रक्चरल स्टील 55% मार्केट शेयर। व्हाट इज दिस गाइस कैपेसिटी टुडे? 3.6 मिलियन मेट्रिक टन। अगर मैं आज का इसका देखता हूँ, 3.6 मिलियन मेट्रिक टन। व्हाट डज ही वांट टू डू? ही वांट्स टू गो टू 1 करोड़ मेट्रिक टन। 36 लाख टन से 1 करोड़ टन जाना चाह रहा है। कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है? कौन कॉल में से? मैनेजमेंट का खुद का गाइडेंस है। दीज आर द ग्लोबल प्लेयर्स। करेक्ट। इसका एबिटा मार्जिन कम है, बाकी लोग मार्जिन लेके काम करते हैं, ये वॉल्यूम वाला गेम खेलता है। व्हाट इज कैपेसिटी? आई सेड 3.6 मिलियन मेट्रिक टन। ये रहा डेटा। व्हाट डज ही वांट टू डू? ही वांट्स टू गो टू 1 करोड़ टन। तो ये अपने आप को कितना बाय 2030? लेट्स गेट बैक टू आवर नोटपैड। 3.6 मिलियन मेट्रिक टन इन 2023, ये हो जाएगा कितना? 10 मिलियन मेट्रिक टन। कितना परसेंट के आकार से ये बढ़ना चाह रहा है? से नाउ 6 इयर्स, 2024 आ गया, 6 इयर्स टाइम पीरियड, 3.6 टू 10। 18. 19%. Is this a good number or a bad number? Very good number. Now again, if 3.6 is his capacity today and his structural steel market share, sorry, is 55%.
So can I do something over here? Can I just divide this 3.6 divide by 0.55? What answer I will get? I will get the total market size today. Please try and calculate. 7%, 7? 6.5%. Say 6 to 7%. You're wrong. 6.5 million, sir. 6.5 to 7 million tons. Now he says, I'm going to make my capacity 10 million tons in the next 6 years. And suppose he still is able to maintain say 50% market share. थोड़ा सा इसको adjust करते हैं. Say 50% market share is able to make over here. So the market potential is 20 billion. कैसे हमने रिवर्स इंजीनियर किया इसके मार्केट साइज को लेके पूरा मार्केट कैसे निकाला. So we are here, we are going here. Next 6 years, what is the CAGR growth rate of the industry now? Structural steel tubes. Now it was mentioned in the report 19%. 20.6, sir. 20.6. तो मोटा मोटा आपका मार्केट 20% से ग्रो कर रहा है और ये बंदा कह रहा है कि मैं 18-19% से 20% से मैं भी मार्केट रेट से ग्रो करूंगा क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूँ. So that means I doubt he will lose market share. 50 ले लो 55 ले लो तो ये 20-21 के आसपास का आपका मार्केट शेयर हो जाएगा. आधा मार्केट इसके पास है. This is the opportunity size. What is the opportunity size? Opportunity size is 6, so say 7. 7 to the 14, 7 is a 21. There is a 300% opportunity size. There is a 14 million metric opportunity size for this guy. Correct? अगर आप किसी इंडस्ट्री में चले जाते हो जहां पर अपॉर्चुनिटी साइज ही लेस देन पीनट है वहां क्या होगा. वहां कोई रिटर्न बनेगा आपका. नहीं बनेगा. So the very first thing you have to look is in the opportunity size. इसको चाहे नाम फैंसी नेम है ये टैम टॉम इज अ फैंसी नेम. What is your opportunity size? What is your market share today? What can be the opportunity size tomorrow? And what can be your market share tomorrow? The two things. What can be your profit tomorrow? And what is your exit multiple? That is your tentative future market cap. And you see what CAGR you have, the growth of the runway. The higher the better. क्योंकि इसमें जितना हम हाई करेंगे तो जितने ब्लैक स्वॉन इवेंट्स आएंगे वो हमको बचा लेगा. जितना हम लो और फ्रेंजी में जाएंगे जितने ब्लैक स्वॉन इवेंट आएंगे वो हमारे को मार देगा. I hope several things decoded today. This is just one thing. We have many more to do. Any comments? Sir, in Smart Analyze also we can do DCF. सर वहाँ पे भी अगर आप थोड़ा खाली दिखा सर सकें कैसे होगा. यही तो प्रॉब्लम है ना सर. हम कर क्या रहे हैं और आप कहाँ पहुंच गए. नहीं ये तो करेक्ट है उसमें आता है. मैं खाली एक्चुअली वो पूछ रहा था कि अगर उसमें हम लोग कर सकते हैं तो रफ आइडिया आ सर जाता है. मैं डीसीएफ नहीं करता सर. ओके ओके. I know how to do it but I don't do it. यही तो प्रॉब्लम है सर. जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक पे तो हम रह नहीं रहे. हम आगे आगे भाग रहे हैं. डीसीएफ इज नॉट यूज्ड फॉर स्टार्टअप्स. We are just at the startup. We're just at the startup and the stage 1 or stage 2 of the business life cycle of the company. DCF is done when your company is a mature company or a declining company, and that too you do a reverse DCF, not a DCF. So अगर आपने examples देखे हो जो मैंने लास्ट आपको बोला था 15 examples, 20 examples, अगर आपने वो देखे हो now pick up those examples and try and read something about it, what the business does, and try and value them. And see what is the market price today and are you getting a cheap discount or are you not getting a cheap discount. Sir, in finance companies, how do we do this? So that is the next topic, sir. अभी ये तो करो सर. Only
ओनली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का Yes, मतलब ये हिसाब से yes, कर सकते हैं. yes, yes. Finance company, you look at the loan book growth, the book value growth, and how do they finance their book values and what constitutes of their book value. This is all you do for the finance companies. मैं अभी सारी चीजें बोलूंगा तो आप कंफ्यूज होगे नहीं होगे. अभी सबको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि इसमें ऐसा क्या वैसा क्या ये कैसे. पहले इसको तो देख लो. एक चीज तो अच्छे से करो. हाँ जी सर. तो स्लोअर द बेटर सर. मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ, जितना फास्ट भागेंगे उतना मिक्सअप होंगे. तो स्लोअर द बेटर. एनी यही क्वेश्चंस? स्पीड सर, यही स्पीड सही है, डूइंग एट द राइट पेस. ट्राइंग टू. तो फिर आप बोलो इंजन स्टार्ट करना है तो फिर इंजन तो सकता ही नहीं है, पता है आपको तो. So I guess questions would come and